Students, we were discussing the successes of planning in India. We know first 5-year plans started from 1951 and last 5-year plans lasted from 2012 to 2017. After that, Niti Aayog came. So, the benefits of planning we discussed, and few topics, few features were left, so that we are going to discuss today. We discuss up to economic infrastructure, means how by the planning in India, by the 5-year plans in India, economic infrastructure of the country increased tremendously. However, yet it requires heavy investment in the sector of economic infrastructure. But so far planning is concerned, so far the benefits of 5-year plans concerned, we enhance the economic infrastructure many folds in comparison to 1951. Now just see today social infrastructure. What is social infrastructure? All the infrastructure which give direct benefits to the people of the society is the social infrastructure. And economic infrastructure are related to the benefits to the growth of economy, like electricity, roads, transport system, that is. So all these are economic infrastructure. So now in social infrastructure, education, healthcare and public facilities are the key components of the social infrastructure. So there has been significant rise in these over time. This education, healthcare, public facilities, ये सब जो है कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स है और इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है. डेथ रेट came down to 6.3 per thousand and average life expectancy came near to 68 years. अब डेथ रेट जो है 6.3 पर थाउजेंड आ गया है. पहले जो है जब आप 1951 के आसपास में देखेंगे तो ये 27 था और उससे 6.3 पे आ गया है. जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वाज 44 इयर्स. इन सम बुक्स 32 इयर्स इज गिवन, बट 44 इयर्स चूँकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे. और अभी कितना हो गया है 68 इयर्स. बट I saw the recent data of 2019 and it was given 69.4 or 5, means that is nearly 70 years. So life expectancy of India increased to 70 years. So this is a good achievement, means just near the double. And all this is possible because of the availability of medical facilities, means improvement in the healthcare system. So thousands of hospitals have been created and free medicines are available there for the poor people. So these are the benefits of the social infrastructure. Number of schools and colleges, universities increased to many folds. Now, during the 5-year plans, focus had been given on education also. However, the focus that should have been given was not given. Means still it is needed a big boost. It is not up to mark, but number of schools, colleges and other technical institutions increased many folds when we compare to the 1951 or before that during the British rule. So we understood the social infrastructure. So by 5-year plans, social infrastructure of India developed many folds. उसके बाद जो आता है employment है, रोजगार है. In different 5-year plans, government launched several employment
generation schemes, and mainly it is fifth 5-year plans, when more focus was given on the removal of poverty and hence generation of employment, क्योंकि पॉवर्टी को हटाने के लिए हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जो है रोज़गार देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है। यदि ज़्यादा बेरोजगार रहेगा, ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा गरीबी बढ़ेगा। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाना पड़ता है। और फिफ्थ पीरियड ऑनवार्ड्स, फिफ्थ प्लान पीरियड जो था उसके ऑनवार्ड्स, उसके बाद जो है लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, इसमें खर्च किया गया। सो इन 12th प्लान गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये 12th प्लान जो है, जो कि लास्ट प्लान था, उसमें गवर्नमेंट सेट किया था कि 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा। और उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स को लाया गया टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। नो सम एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आप देख सकते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। उसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है। मनरेगा के बारे में आपको मालूम होगा कि उसमें जो है 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें श्योर करता है कि 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। तो ये सब स्कीम के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाता है। नाउ वी आर नॉट नीडेड टू लर्न ऑल दीज स्कीम्स इन डिटेल्स. You have to remember only the benefits, the success that obtained from the 5-year plans. Now next one is international trade. During plan, volume and value of India's foreign trade have increased significantly. Now as we know that during the British rule, India was doing the international trade with many countries, but more than 50% of the volume and value of trade was with Britain only. So it was a monopoly control on the Indian foreign trade. But during plan period, it increased many folds. Composition of exports and imports has significantly changed. Now when you compare to first 5-year plan to last, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि ये जो पैटर्न्स है कंपोजिशन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का, वो चेंज हुआ। पहले हम लोग रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है ये पैटर्न। अब हम लोग फिनिश्ड गुड्स को भी, इंजीनियरिंग गुड्स को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते, हम लोग सॉफ्टवेयर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। So we are now exporting engineering goods, and India has been emerging as one of the industrialized nation. और हम लोग जो है धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ना यहाँ पे कुछ डेटा है जो आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, इसको आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस समझने के लिए जो है हम यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। During the first plan 1951 to 56, export were rupees 3,109 crores. इतना का हम लोग एक्सपोर्ट किए थे 51 से 56 के बीच में। इतना रुपया का, कितना का, 3,109 crores का, which increased to rupees 9,050 crores in fourth plan. फोर्थ प्लान में वो तिगुना हो गया, आप देख सकते हैं लगभग तिगुना हो गया, 9,050 crores हो गया इन फोर्थ प्लान। ठीक है, टू रुपीज़ 23,640 crores in fifth plan, to rupees 90,165 crores in seventh plan, and further 5,62,239 crores in 1997 to 2001.
These figures indicate that in terms of value the exports of India have grown. तो अब देखिए 1951 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था उसमें हम लोग कितना कर रहे थे 3109 करोड़ का, लेकिन वहीं आपको 1997-2001 में देखिए कितना हो गया 5,62,000 हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है इंक्रीज हुआ। Now similar to exports, now we are looking for imports. The imports were rupees 3,651 crores during the first plan period, that is 1951 to 56. It increased to rupees 9,863 crores in fourth plan, and in this way later it increased at the alarming rate and reached up to rupees 6,94,347 crores. 6,94,347 crores in 1997-2001. The above growth in imports has grown at a much faster rate. और ये जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, in terms of exports as well as in terms of imports, in both terms increase many folds. However, imports grown much faster than export. तो अभी भी हम लोग का जो ट्रेड बैलेंस है वो अभी भी निगेटिव है, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। Now plan wise total foreign trade of India rupees in crores. So it is given, you can see डेटा हम लोग यहाँ डेटा को याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसको जो आप याद नहीं रखेंगे बस एक बार देख लीजिए इसको, ताकि आप समझ सकते हैं, आपका दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। Okay. So now this is all about the success stories of 5-year plans in India. I hope that you have understood this. Now next topic we will discuss in next class.